हेलो अंकित, वेलकम। कैसे हैं आप? हेलो सर। ठीक हूँ सर। मैं बस आपकी दया है, आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच। चलिए, तो आप पहले एक बार जो भी व्यूअर्स हैं जो भी इस वीडियो को देखेंगे उन्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड currently I'm studying in TU Berg Academy Freiberg in the course of computational material science. And this college is really, really amazing. I mean, it has a CHE ranking of number one for material science and material development and for metallurgy, and also it has a QS ranking of 18th in mining, metallurgy, and sustainable mining. सो इट्स वेरी गुड, So इट्स it's really good. फैंटाबुलस। सो Yeah. वुड लाइक टू नो योर जर्नी कि आप कैसे यहाँ पर आए, या आपने कैसे वहाँ पे अप्लाई किया, या इंडिया में भी थोड़ी बहुत अपने ग्रेजुएशन वगैरह, क्योंकि बच्चों को बड़ा डाउट रहता है कि नहीं यार, जो आईआईटी से हैं या जिन्होंने आईएससी बैंगलोर ज्वाइन किया है वो ही ऐसे इतने टॉप कॉलेजेस में पहुंच पाते हैं। थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड बताएंगे हमें? Yes, actually, I completed my undergrad from YMCA University Faridabad in the stream of mechanical engineering, and I passed out, I guess, in the May of 2020. I ओके। was in the COVID batch, so सो दैट्स अमेजिंग। yeah. And after that, I had a campus placement, I guess, from Jindal Stainless Limited, ओ। and I was posted in SR. Actually, my joining was like 6 months postponed due to COVID. So I started working for the company from like January 2021. ओके। Yeah. Okay, so And you have not done any other like you have not done masters here in India also. Many of yeah, the students that I do know that they generally try to do masters in India. कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इंडिया में मास्टर्स करेंगे फिर बाहर जाके हाँ, दोबारा से मास्टर्स करते हैं। वापस मास्टर्स करते हैं। Yes. हाँ, क्योंकि फिर बाहर जाके वहाँ पे जैसे अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो वहाँ वहाँ की डिग्री होना जरूरी होता है। सो क्या प्रोसीजर क्या रहा था जिस प्रोसीजर के थ्रू आप वहाँ पे अप्लाई करें, या? Uh, Procedures basically depends on like two or more things. I mean, like this university was much more like that's the thing about the niche universities. They start everything from the ground up to ground zero from like by themselves. Like if we are applying for different universities, even for public universities, they have a thing known as Uni Assist in Germany that does your profile evaluation and evaluation of your transcripts and a degree that certifies that your documents are authentic and all. And accordingly for that you'll get a CGPA in the European German framework. ओके। Here they have GPA, and so it depends. So my GPA here was like 2.1 from undergrad, so it was just ओके। okay, above So average. it's out of 5 or 4? It's Yes, out of four, I guess. 4. Okay, so 2.1 out of 4. So what I can assume that your BTech percentage was nearly 65, 70, that in No, that no, range no, only. 70, no, no, 75. no. My percentage was no. I guess it was like from 1 to 5 grade in European German framework. In Okay. American, it's like the reverse. It is 1 to 5. The thing is, my Okay. percentage was like my CGPA here was like 7.792 in India. Okay. Okay. That's Okay. like So seven it's point good. eight around. So सो व्हाट वी कैन सी दैट हम यहाँ से ये भी सीख सकते हैं कि अगर आपका बीटेक कहीं बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं है तब भी आप एक hmm. अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में आगे बाहर जा सकते हैं। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस फॉर अप्लाइंग? आपने कुछ अप्लाई किया होगा, कुछ टेस्ट वगैरह होते होंगे, इंटरव्यूज होते होंगे। सो कैसा एक्सपीरियंस था, क्या क्या प्रोसीजर है, थोड़ा सा अगर आप बताएंगे तो? Yes, yes. So actually, at first I started to know about things first. Like in for depends on country to country. I specifically chose Germany because the tuition fee here is zero. So my semester contribution that takes all in all is like 94 euros. That's like 8,000 rupees. टोटल सेमेस्टर फी? Yeah. इट्स वेरी चीप। हम इतने Yeah. में तो अपने यहाँ कुछ नहीं होता। इतने में तो शायद महीने का रेंट निकलता है लोगों का। Yes, sir, yes, sir. So the thing is that I first try to understand everything about the field that I am, because I didn't have much things to land with. I wasn't in a Maruti Suzuki company, like automobile, because that's like considered as a heaven for mechanical engineering. So I was in like a material development company, like Jindal Stainless Limited. It's the largest stainless steel producer company in India, I guess, in blade steel. That's a fact. So I try to make do with what I have. And when I went through that, I
focused quite much on the projects because, like I said, depends on country to country. Germany is a country that solely and totally just sees what you have and what the skills you have and how did you do that. So my super revolved around like my projects. The main thing that I guess was a judgment factor for me to crack into two TU9 universities, apart from TU Freiburg, was like my projects that I did in Jindal Stainless Limited. And I had the, how should I say, the fortune. I was quite fortunate there to work in the to work under somebody known as Dr. Santosh Kumar. He's like the ex-director for RDCIS SAIL. That's like the Research and Development Center for India. SAIL. So after he retired from there, he came to Jindal Stainless Limited, and I worked a lot around like mathematical modeling and process simulation and all. So my profile got much more into the R&D sector and much more towards devising mathematical models and something like that, and solving real-time solutions. So, and meanwhile doing so, I also developed some skills. I also skilled myself, and basically, I worked upon like on my SOPs, on the work that I'm doing within the company, on my LORs, the projects, and like only 5 to 4% on IELTS or something like that, because I only gave IELTS so, and that very wasn't even nice. necessary Okay. for getting into this college. So, I mean, so basically, what I can conclude that your course is an English language course. It is not a yes, German-based course. Okay. So German. many of our students do have a doubt that when you are going to Europe or any German college, you do need a German A1 level or B level certification. So have you done anything like that? No, sir, not right now. I mean, Okay. that's the thing. Depends on what you're cracking into. Mm-hmm. Like, I specifically chose my course because I wanted to work in this field, and uh, like there's been this लाइक व्हाट कैन आई से लाइक इंडिया में जैसे बहुत लोगों के पॉइंटर्स कुछ के नीचे होंगे कुछ के ऊपर होंगे। ठीक है, मेरे पास इतना चॉइस था कि मैं चांस ले सकता हूँ कुछ कुछ कॉलेजेस में, कुछ कुछ उनके नीश प्रोग्राम्स में आने के लिए। जैसे कि मेरा प्रोग्राम इंटरनेशनल मास्टर्स कोर्स है, वो बहुत नीश है क्योंकि उसमें 5-6 फैकल्टी मिल के पढ़ाते हैं, और उसमें बस 25 लोग होंगे शायद शायद या उससे भी कम, और ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं उसमें फिर उसके रिगार्डिंग। सो द थिंग इज दैट कि डिपेंड करता है आप क्या क्रैक करना चाहते हो। अगर आप उस कोर्स में जाना चाहते हो जहां बस इंग्लिश मांग रहा है, तो आपको फिर जर्मन लर्न करने की जरूरत नहीं है। कर लिए तो अच्छी बात है, मे बी जॉब में काम आएगी, वो भी शायद एट द लॉन्ग एंड शायद जरूरत पड़े ना पड़े, डिपेंड्स ऑन यू। जैसे मुझे थोड़ी सी डेवलपमेंट आती थी, तो आई हैड अप्लाइड टू सम I had applied to some other company, and they were offering me a job, but I kept it down because I had too many subjects, and like 10 सब्जेक्ट है कि सेमेस्टर में, और यहाँ पे पढ़ाई ऐसी, मतलब इंडिया से पढ़ाई काफी अलग होती है। यू ऑलवेज नीड टू कीप स्टडिंग बिकॉज इनका करिकुलम इतना इतना डीप है सर कि मतलब यू कैन डेविएट फ्रॉम एनी ऑफ दिस सो मतलब थिंग। जो जिन्होंने जैसे हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि हम आई एम फ्रॉम अ पंजाबी कल्चर, तो हमारे बोलते हैं कनाडा जाना है। कनाडा लोग इसलिए जाते हैं कि वहाँ पढ़ेंगे नहीं, जॉब करेंगे। तो यहाँ कल्चर उल्टा है, यहाँ जॉब नहीं करेंगे, यहाँ पढ़ेंगे ज्यादा, यहाँ यहाँ पे स्टडी। जॉब मिल भी सकती है, छोड़ भी देते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्योंकि ना वर्क लाइफ बैलेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है और सोशल सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो दैट्स द थिंग। आई मीन इवन व्हेन आई वाज डिस्कसिंग इट विद माय फादर, सो ही वाज लाइक कि डोंट बॉदर। आई मीन मैं जिस प्लेस पे रह रहा हूँ यहाँ, मतलब ये बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। तो इसका मतलब इटालियन आर्किटेक्चर ये सब कुछ है, लेकिन ये जगह बहुत सस्ता है। तो अगर हाँ हाउएवर अगर मैं मतलब अगर मैं दूसरे यूनिवर्सिटी में जाता हूँ जैसे ब्राउनश्वाइग या बर्लिन या ड्रेसडन, तो म्यूनिक हाँ है। वो मेट्रोपॉलिटन है, थोड़ा महंगा। म्यूनिक है एग्जैक्टली। एंड सो यस, एंड अगर आपका पॉइंटर नीचे है तब आपको जर्मन मैं सजेस्ट करूंगा कि कर लो, क्योंकि फिर उसके केस में आप, क्योंकि मैक्सिमम ये चीज होती है सर कि यहाँ के लोग बैचलर्स करने के बाद मास्टर्स पे नहीं जाते अक्सर। तो यहाँ के खुद के जो कोर्सेज होते हैं, जो जर्मन स्पीकिंग कोर्सेज होते हैं, उसमें मास्टर्स वही लोग जाते हैं जिनको रिसर्च में आगे सही में जाना होता है। तो वहाँ पे सीट बहुत वेकेंट होती है, बहुत बहुत ज्यादा। वेकेंट होती है। हाँ, तो किसी का भी कोई भी पॉइंटर हो तो वो उसमें आ सकता है, बट प्रोवाइडेड जर्मन लैंग्वेज वो सीखे, एंड ठीक दैट्स है। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू व्हेन आई वाज डूइंग दिस।
So I was like, let's apply for this. So जैसे आपने बोला कि आप कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस में हो, तो कंप्यूटेशनल तो चलो ठीक है, आज के समय में सीडीएस का बहुत चल रहा है, कंप्यूटेशनल डेटा साइंस, कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स, काफी चीजें चल रही हैं. Material science is something that generally a mechanical engineer or a metallurgical engineer, or what we can say that any student जो कि इंजीनियरिंग कर रहा है, वो सबसे ज्यादा किसी सब्जेक्ट को हेट करता है, तो वो मटेरियल exactly. साइंस है. सो Yes, sir. हाउ यू जस्ट चोज दैट सब्जेक्ट, वेदर इट्स बेसिक कि आपको भाई मतलब कुछ दिखा है इसमें, या ऐसा कुछ था, मतलब क्या मटेरियल साइंस ही क्यों? सर ये मतलब ना ये फिर एक कहानी है, क्योंकि हम्म. एक्चुअली आपको पता होगा, मतलब आई मेट यू विद आई हम्म. कनेक्टेड विद यू ऑन एन अकेडमी. सो Okay. I was fortunate enough to learn from you. You made a lot of things easier for me, and I Thank you so applied those much. things in Guruji Pallav. So that's the thing. Exactly, मतलब. that's the thing, sir. So हम्म. I applied those things in learning things again from my bachelor's, हम्म. because if you'd see my transcripts, I only got like a 7 pointer in material science. So that's okay, but that's not good. हम्म. So I tried to furnish my basics again and again. And then when I was working in a Jindal Stainless Limited company, I got to Might work have with, seen a very good types of steel also. The best yes, use sir. of iron carbon diagram is only at Jindal Pyramid Steel steel. or at Tata Steel. Yes, Yes. sir. Exactly, exactly, sir. And I got to work with like amazing metallurgists there. Mm-hmm. Dr. Santosh Kumar, Dr. Arnab Kundu. Also, my colleagues were amazing. Satvik Komula, and also I had a junior from IIT Roorkee. He was also amazing. He helped me also a lot. And that's the thing. I mean, I saw the market much more something you can dive into and exploit, and that's steel industry. Uh, Providing solution to steel industry. Mm-hmm. Like if you look at like this, like if I'm so thankful that I'm not in an automobile company right now, because if I'm in an automobile company, I already know my solutions. Things are working Mm. in separate ways. Like there's a separate Material science design is department. material science is something. It is like an onion. I Yes, always want it to can give be an used anywhere. example. It is like an Exactly, it onion. can be used. So you Exactly, can it go can be used. deep in the topic. It's something that you will love Exactly, if you understand. It's understand something that you exactly, will, and it's very important to understand the things. Basically, you will never exactly, sir, understand the exactly, things if you are not in love with that subject. I do understand what material science is. You do know that I am a faculty of that subject and I do teach that subject. I do love that particular subject. So, yes. exactly. You just love diving deep into this subject, because you just every time you read something like a new research paper, something like that, you're like, okay, this is how this works. Okay, this is how this works, and then you start to learn more and more about this Hmm. thing. By just So that's understanding the thing. material science, you will be able to solve literally any problem of any problem in any subject. Exactly, अगर आप मटेरियल exactly, साइंस, क्योंकि आपको हर चीज में मटेरियल तो बनाना है, एट द एंड हमारा exactly. मेन फोकस है मटेरियल बनाने का. सो यस, वी कैन से दैट. सो आप अपनी तरफ से कुछ मोटिवेशनल बच्चों को कहना चाहेंगे, क्योंकि आप या अपनी स्टोरी शेयर करना चाहेंगे बच्चों के साथ, जो बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट कर सके. वैसे हर ओके, किसी की हाँ, कुछ ना कुछ कहानी होती है, लेकिन मैं आपकी कहानी हाँ. आपकी जुबानी जानना चाहूंगा. और अगर आप कुछ बच्चों को मोटिवेट भी करना चाहें, तो आप बस अब ये लास्ट जो नेक्स्ट 10 मिनट्स है, 5 मिनट्स, जितना आप चाहते हैं वो सारा आपका है. आप कंटिन्यूस बच्चों से इंटरेक्ट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स नहीं है, बस अपन दोनों ही है, लेकिन स्टिल यू कैन. Yes, yes, sir. Actually, I gave my GATE exam in 2020, और उसके बाद में कोविड आया, उसके बाद में सीट्स कट गए, उसके बाद में मेरे स्कोर की वैल्यू रही नहीं, और मैं वो स्कोर बताऊंगा नहीं, क्योंकि अब मेरे लिए वो मैटर नहीं करता. ठीक है. उसको जब जब याद करता हूँ, मीटिंग होगी तो मैं बताऊंगा भी. ठीक है. इसलिए उसके बाद आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू वर्क फॉर एनी कंपनी, एंड जिंदल स्टेनलेस adopted me. I am grateful for them because they gave me this jump start. That company, I worked my ass off. I was literally awake for like 192 hours, also even for my simulation, because that makes you hungry. Getting success makes you hungry. So that's what I did. And then when I was working for this company, I realized how I could also develop myself as a brand. I've always thought that I should always develop as a brand just after COVID, because a lot of layoffs were there. And I was just fortunate enough to be here. This company has just given me some chances. So I was like, okay.
Then I started working in this company. I made 4 amazing projects. I was involved in one of the projects whose ever heard of SS rebar, sir? Mm-hmm. Like SS rebar, like you have a Mm-hmm. TMT rebar, right? So it's Mm-hmm. Yes, stainless. yes, yes, yes. Yes. So SS rebar, the first project that ever launched in India, I was into that project simulation design. I did that whole by myself. And Mm-hmm. apart from that, as I dig deep down in this thing, I realized how amazing materials can be. I mean, that's the thing about us humans at first. You know, you first try to गाली बहुत देते हैं कि भाई ये में नहीं हुआ है, Mm-hmm. इंटरनल में नहीं हुआ, ये सब नहीं हुआ, फिर ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ. जहाँ हो उसको ऐसा क्यों होना चाहिए हम लोग. That's what I would say. I saw Jinder Stainless. I was like, yeah, I didn't crack it and something like that. This doesn't happen. So I was like, okay, I need to look after this. And as I was working through that company, I realized how big of a steel sector is. Not just steel, like any material sector, especially semiconductors we're talking about. Like my college does a lot of research in semiconductor manufacturing and all. And there is Global Science Foundry, like just 30 minutes drive from here. So that's an amazing sector to grow upon. And the thing is, as I started working more and more, and I started to learn more and more about mathematical modeling, atomistic material designing, atomistic material modeling, and fracture propagation, computation of this in lead.ll library in C++. I started to connect things like अगर ये IT सेक्टर की चीज है, अगर ये मटेरियल सेक्टर की चीज है, तो मैं नहीं देख रहा कि मुझे ये पढ़ना है कि कितना पढ़ना पड़ेगा, मुझे ये आउटपुट चाहिए, तो मैं करूंगा, मैं हटूंगा, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, लेकिन मैं हटूंगा. दैट्स द थिंग. गिव अप कर लिए तो फिर तो गए, ये कोई ऑप्शन नहीं. ठीक है. And then I worked strongly upon my SOP. I worked strongly upon my LOR. After I completed all of these things, my notice period, I You got honestly your didn't know. LOR from your college or from your company, because they Both, sir. accept both. I've got it from, yeah, from both of them, because I think it's something that one should definitely have at the back of their hands, because this is something like you work for this company, so the company should also acknowledge you. And my work-life balance was, I like sacrificed my work-life balance for 1.5 years, but now I'm taking the fruits of it. So I have no Hmm. regret. That's the thing. So this is, And hmm, and yes, sir. And this apart is from that, when we are thinking about Germany or any other college, something like that, just think like, what do you need in future life? Like, honestly, I wasn't thinking about like I'd be fortunate enough to be in this college. I had already taken down like two more colleges from TU9, TU Dresden, TU Braunschweig. So I was like, okay, we have got TU Freiburg also, but I didn't know how big of a deal it was. Then and yes, also the TU9 is like the elite IITs of hmm, Germany. yes. You can search it. Like, yeah, like the Hmm. TU9s are the most elite and the most funded, the most ultra cutting edge technology university there is in Germany. And one notch up from these are like the research That they can provide. industries, or Yes. the, yeah, or the research provider like Max Muller Planck Institute and something like Hmm. that. Research institutes are taking much more. That's a notch up. So that's the thing. मैं यही बोलूंगा कि मतलब कुछ भी हो जाए, हार नहीं माननी चाहिए. जिंदगी में जो भी हुआ हुआ, फर्क नहीं पड़ता. अपने आप को ब्रांड बनाने की जरूरत. बिल्कुल सही बात है। भगवान अगर एक गेट बंद करता है तो कहीं ना कहीं एक गेट और खुला हुआ है, बस आपको भूल जाता है. ढूंढने की अरे जरूरत है। एग्जैक्टली. दिक्कत है हम ढूंढते नहीं है, हम बस निराश हो और हम लोग जाते हैं। कोसते हैं आपस में. एग्जैक्टली. हम हम्म, लोग आपस में कोसते हैं तो फिर देख नहीं पाते. बस देख नहीं पाते। सो इट्स नाइस टॉकिंग टू यू। सो इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ वेरी I am नाइस डे। thankful to you, अ sir, फ्यू for guiding me in the first breaks. Like I said, you were the first one who introduced me to material science, because trust me, I hated it at first. I hated it at the first point. And you just made dislocation seems like, okay, these are Poisson vectors. Okay, so that's how screw dislocation works. And I was like, So then I was like, okay, this was like amazing. And then it was less just like, then I it's got to work with some amazing material science metallurgists. And is material science is something that I do love actually. दैट इज समथिंग दैट्स अ ब्यूटी ऑफ मेटल साइंस। जितना आप पढ़ते हो ना, आपको ये फीलिंग आती है कि यार ये सब्जेक्ट के बारे में मुझे कुछ नहीं आता है, और जितना आप कुछ पढ़ते हो ना, एग्जैक्टली. आपको ऐसी फीलिंग होगी कि यार
मेरे कितनी चीजों के सोल्यूशन तो मुझे खुद ही मिल रहे हैं। मैं जब भी मटेरियल साइंस पढ़ाता हूँ मैं खुद बोलता हूँ कि हाँ, मटेरियल साइंस इज एग्जैक्टली, स्टडी ऑफ योर सेल्फ ओनली। ये आपकी खुद की स्टडी है। एग्जैक्टली, आपको ऐसा फील होगा एग्जैक्टली। कि आप अपने आप को ज्यादा जान रहे हो। सो आपने RW वाले जो TH आइकन वाला कॉलेज है वहां पे क्यों नहीं अप्लाई यस, किया? क्योंकि सर दैट्स द बिगेस्ट मिसगाइडेड information that we as in Indians are served, like RWTH Chakan और यूनी की सबसे अच्छी कॉलेजेस है। हम हम्म लोग ओवरऑल यूनिफाइड क्यूएस रैंकिंग देखते हैं, जबकि जर्मनी हम्म। में CHE रैंकिंग है फॉर एवरी सेपरेट डोमेन, डोमेन। लाइक मटेरियल ओके साइंस के लिए, मैकेनिकल के लिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, सेमी इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, आईटी के लिए, तो उसमें अंतर आता है। ओके तो ओके इसीलिए ओके। मैं CSE रैंकिंग देखता हूँ। ये भी पहले मेरे साथ एक कंफ्यूजन था, सो बट आई सॉर्ट जैसे इट। सर CSE रैंकिंग के बारे में बता रहे हैं, तो मैं इसका जो भी वेब पेज होगा सर से लेके उसे कमेंट हाँ, सेक्शन में डाल दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए हाँ, डिस्क्रिप्शन हाँ, बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप लोग वहां से अच्छे कॉलेजेस सर्च कर सकें। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और वो उसके बाद आप मतलब ये चीज मैंने की थी जो बहुत हेल्पफुल होती है, आई वुड रिकमेंड कि सब लोग ये चीज करें, कि CHE रैंकिंग से आप पहले कॉलेजेस सॉर्ट आउट कर लो, फिर उसमें अपनी क्राइटेरिया देखें क्या मांग रहा है, कभी हम्म लैंग्वेज मांगेगा, कभी लैंग्वेज नहीं मांगेगा, कुछ हम्म भी हो सकता है। उसके बाद में उस कॉलेज में थॉरो स्कैन करें उस कॉलेज को, हम्म थोड़ा स्कैन करिए उस डिपार्टमेंट के बारे में, उसके कॉलेज के बारे में, उसके स्पेशलाइज स्किल्स के बारे में, उसके कोई स्पेशलाइज कोर्स या नीश कोर्सेज है, कोई बैचेज है उसके बारे में, हम्म। रिसर्च के बारे में, सब कुछ है कि दैट्स द थिंग, दैट्स व्हाट दे से अबाउट द जर्मन वे, बिकॉज नहीं करोगे तो प्रॉब्लम ही होगी आपको end में। प्रॉब्लम ही जैसे होगी। क्योंकि मेरा एक दोस्त है जो अभी मतलब कहीं और है, मतलब वो यहाँ नहीं है, दूसरे T9 यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो जिस कोर्स में गया वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो यहाँ पे नहीं पढ़ाते, बट वो गया था क्योंकि उसका बस नाम था, बट वो बहुत सारी चीजें सीख नहीं पा रहा, तो फिर उसको अलग से पैसे देके सीखने पड़ रहे हैं प्राइवेट, जैसे हम्म। कोई कोचिंग से या शायद से, हम्म। तो फिर उसको सो फायदा देयर नहीं इज है। वन मोर थिंग वो जिसका मैं भी पूछना चाहता था, मैं भूल रहा था। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज दो हैं। डिफरेंस वहां पे, जैसे अपने इंडिया में तो हमें पता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर नॉट गुड, वी नो दैट। यस, ऐसा वहां पर भी है या वहां कुछ है डिफरेंस? बिकॉज ऐसा सर जनरली यहाँ हम 97, यस सर, यस हम्म, सर, यस सर, यहाँ इन द सेंस यहाँ 97% केसेस में ऐसा है, नहीं 99% केसेस में ऐसा यहाँ पे भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अच्छी नहीं है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है। हाँ, अच्छे हैं। यहाँ वो मतलब मैक्सिमम सब लोग जगह है। गवर्नमेंट में ही जाते हैं, हाँ यहाँ एग्जैक्टली। पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर ऑलवेज बेस्ट, हमें पता, सॉरी, पब्लिक यूनिवर्सिटीज आर ऑलवेज बेस्ट, उनकी वहाँ पे में भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज की ही ट्यूशन फीस जीरो है। बाकी सबकी शायद हाँ, ट्यूशन फीस है, वो काफी अच्छी हाँ, खासी है। प्राइवेट की, प्राइवेट की। हम्म। और जो मुझे कोर्स में RWTH आखिर में जाना, मतलब मैंने अप्लाई करने का सोचा था, मैंने किया नहीं, क्योंकि उसका ट्यूशन फी वाज लाइक 22,000 यूरोस। ओह, दैट्स एक्चुअली यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय RWTH में 90, एग्जैक्टली, सो इट्स वेरी हाई। इट्स मतलब वेरी हाई। ऑलमोस्ट और मैं आपको ये कोर्स, 18 के आसपास पड़ गया वो। यस सर, क्योंकि मैंने सबसे पहले कॉलेज सर्च किए थे प्रोसेस सिमुलेशन, डिजाइन सिमुलेशन और मैथमेटिकल मॉडलिंग, जहाँ पे ये सब चीजें पढ़ाई जाती है, तो मैंने हम्म 10 कॉलेजेस सेलेक्ट किए, मान लो, तो वाज लाइक मैं 10 और 10 में अप्लाई करता, तो वहां मैंने RWTH चाकन सर्च किया, फिर मैंने कुछ और भी सर्च किया, फिर वाज लाइक यार इसकी फीस तो बहुत ज्यादा है, हम्म सेंस बनता नहीं है, मतलब हाँ मतलब हो सकता है अगर इन द सेंस अगर आप वहां जाओ, लेकिन वो जो चीजें वहां पढ़ा रहे थे वाज लाइक, मतलब उनका करिकुलम अगर आप देखोगे ना RWTH हम्म आखन का, आप एक बार को में सर्च करना या का में सर्च हम्म करना, तो दैट्स द कोर्स दैट आई वाज गोइंग फॉर, कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, बट उसमें कुछ कुछ चीजें जो उनका करिकुलम डिजाइन था वो बहुत ब्रॉड था, हम्म। एंड आई वाज लाइक ओके, वो मेरे को ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रहा है उसमें से, कि मैं अगर इसका ये सब्जेक्ट चूज करूंगा अपने सेमेस्टर में तो उसमें क्या चीजें पढ़ाएंगे, जबकि बाकी सब यूनिवर्सिटी में होता ओके, सो है। यू तो हैव टू सेलेक्ट योर करिकुलम। सबको पहले ये भी समझना है कि आप पढ़ना क्या चाहते हो। पता चले कि आप किसी अच्छे कॉलेज में पहुंच एग्जैक्टली, गए, लेकिन आप वो चीज पढ़ रहे हो जो आपको लेकिन आती नहीं है या आप पढ़ना नहीं चाहते हो, तो मेरा मन बैकलॉग्स नहीं है, वगैरह भी बहुत एग्जैक्टली, चल, वो चीजें नहीं होनी बहुत चाहिए। बहुत गंदी लगी, बिकॉज एग्जैक्टली, बीटेक में चल जाता है, मास्टर्स में ऐसा नहीं चलता, क्योंकि आगे वही जाकर वही, फिर आपको ही पूरी जिंदगी भर उस सब्जेक्ट को ढोना है। सो हाँ, सो ये थे हमारे इसलिए साथ अंकित। Thank you, Ankit, and congratulations to you for this, for achieving such a good life, such a great life. And I just bless you this with the I'm thankful to happiness, you, sir. I'm thankful to you, sir. and I'm may thankful. God bless you. Right, Sure. thanks. So, Exactly. Truly, sir. my best wishes to you, एंड होपिंग सो कि बच्चे भी आपकी इस बातों को समझ पाएंगे। अगर कोई बच्चा आपसे कोई डाउट वगैरह पूछेगा उस समय जब भी मैं इस वीडियो को पब्लिश करूंगा, सो आप कोशिश करिएगा समय निकाल करके उनका जवाब दे पाए। मैं आपको ठीक है, बता श्योर दिया सर। करूंगा
एंड मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ द लक एंड बेस्ट विशेस फॉर द फ्यूचर. Thank you, and thank you for joining with us. Thank you.